Hello students of class 5th. Welcome to your English class बच्चे. So children, today we are going to start our new poem that is Bessie's Song to Her Doll. Okay. The name of the poem of Roots and Wings is Bessie's Song to Her Doll. And children, this video is gonna to be the first part in which I will explain the poem. Alright. There will be recitation of the poem and explanation also. And in the next part, I will discuss the exercises that will include question answer, fill in the blanks, whatever it is given in the exercises that will be discussed in the part 2. Alright. Okay. So children, this poem is written by Lewis Carroll. As you can see the name here, it is given Lewis Carroll. And this name is not his real name. Okay. The real name of that author is Charles Lutwidge Dodson. Alright. The name of the writer, or you can say poet, was that. The real name I'm telling. जो उनका real name था, what was that? That is Charles Charles Lutwidge Lutwidge and then Dodson Dodson. Alright. And Lewis Carroll is the pen name. जो क्या होता है ना, राइटर जब अपनी बुक लिखना शुरू करते हैं, कोई भी राइटर या पोएट, तो वो क्या करते हैं ना, अपनी नेम चेंज कर लेते हैं जिससे वो फेमस होते हैं. ओके, देन दैट विल बी कॉल्ड एज पेन नेम. बट अगर रियल नेम की बात की जाए देन दैट इज चार्ल्स लटविज डॉसन. ऑलराइट. ओके, नाउ कम टू द रिसाइटेशन ऑफ द पोएम. सी हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन द पोएम, कैन यू टेल मी? या हियर इट इज. दिस वन इज योर फर्स्ट स्टैंजा, this one is your second stanza, and then here this is your third stanza, and then this is your fourth stanza. All right, it means there are 4 stanzas in the poem. Fine, so let's recite. Read and enjoy. Matilda Jane, you never look at any toy or picture book. I show you pretty things in vain. You must be blind, Matilda Jane. Now come to the next stanza. I ask you riddles, tell you tales, but all our conversation fails. You never answer me again. I fear you are dumb, Matilda Jane. Now come to the next stanza. Matilda, darling, when I call, you never seem to hear at all. I shout with all my might and main, but you are so deaf, Matilda Jane. Matilda Jane, you needn't mind, for thou you are deaf and dumb and blind. There is someone loves you, it is plain, and that is me, Matilda Jane. Alright. See children, there is a little girl, as you can see in the picture, here it is. And her name is Bessie. What is her name? This girl's name is Bessie. Bessie. As you can see the name of the poem also. Okay. And she is having her doll. See this one. And what is the name of that doll? That is Matilda Jane. She calls by her name, that is Matilda Jane. Okay. Here the doll's name is Matilda Jane. ये doll का नाम क्या है? Matilda Jane है. और इस little girl का नाम क्या है? Bessie है. Alright. आपको पता है ना गर्ल्स क्या करती हैं, वो ना टॉयज़ अगर उनको मिल जाए, अगर उनसे पूछा जाए कौन सी टॉय चाहिए, तो वो क्या बोलती हैं? डॉल चाहिए उनको. बार्बी डॉल चाहिए, सिंड्रेला चाहिए. मतलब वो सबसे ज़्यादा अटैच किससे होती है? डॉल से होती है. राइट. और अगर बॉयज़ से कुछ बोला जाए, उनसे पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं? कार चाहिए, फुटबॉल चाहिए, क्रिकेट चाहिए, क्रिकेट के लिए वो बैट चाहिए, बॉल चाहिए एंड ऑल. ये सारे वो डिमांड करते हैं. राइट. या और जो गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं? डॉल से खेलती हैं. सो हेयर दिस गर्ल दैट इज़ बेसी, शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग विद द डॉल. ओके. एंड सी, अच्छा आप ये बताओ कि आप डॉल से जब खेलते हो तो क्या डॉल आपसे बातें करती है? नहीं ना. और आप उससे कैसे बड़ा प्यार से आपसे बात करते हो, बड़ा प्यार से उसे आप सजाते हो. पता है, मैं अपनी स्टोरी बताऊँ? हंसना मत, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जो मैं भी जब छोटी थी ना, मैं भी अपने डॉल के साथ खेलती थी. और मैंने पता है अपने डॉल के लिए बहुत सारे कपड़े सिलवाए थे अपनी मम्मा से. और उसके ना छोटे छोटे कपड़े मैंने रखा था. एंड देन उसकी मैं ना पोनी बनाती थी, उसे हेयर स्टाइल, नया नया हेयर स्टाइल देती थी. एंड देन उसको लिपस्टिक लगाती थी. तो पता है लिपस्टिक मैं क्या करती थी? नेल पेंट्स लगाती थी. क्यों ना, कि वो वाली लिपस्टिक ना पूरा उसके चेहरे पे ना वो फैल जाता था. तो मैं ना उससे वो नेल पेंट से लगाती थी ताकि वो परमानेंट रहे. एंड देन उसके बाद मैं उसको है ना, उसके लिए मैंने ज्वेलरी भी रखा था.
जैसे कि फॉर एग्जांपल जो माथा टीका होता है ना, टीका पहनाना, एंड देन ईयरिंग्स मैंने उसके लिए बनाए थे। जो भी मतलब मेरे ईयरिंग्स वगैरह होते थे ना, मैं वो टूट जाते थे, मतलब पुराने हो जाते थे, तो मैं क्या करती थी, या फिर मेरी दीदी के जो भी ईयरिंग्स वगैरह हुए मेरी सिस्टर की, उसका मैं क्या करती थी, उसे यूज़ करती थी। और उसे ना कुछ चेन वेन अगर मुझे मिल गया छोटे से, देन ब्रेसलेट का वो चेन वगैरह, तो मैं उसके लिए उससे टीका बनाती थी। एंड देन उसके फिर वो ज्वेलरी मैंने सारा कुछ रखा था, उसके अलग से मैंने कपड़े रखे थे, और मैं उससे खेलती थी। और मेरे पास ना किचन सेट भी थे, ठीक है, जिसमें सारे वो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं ना, बर्तन वगैरह, तो वो सारे, और मैं ना खेलती थी उनसे। और एक बार तो मैंने ना अपने डॉल की शादी भी करवाई थी। बस ऐसा ही हम लोग खेलते थे। मतलब अब तो वैसा नहीं होता। जब हमारे टाइम में ना क्या होता था कि आपने बहुत सुना होगा गुड्डे गुड़ियों की शादी हो रही है। हाँ, सच में। एक मैं जब अपनी दादी घर गई थी ना, तो वहाँ पर एक शादी हो रही थी। मतलब हम लोग ना जब मैं तो छोटी थी, जो हमसे बड़ी बड़ी थी ना, वो लोगों ने क्या किया था, एक ने वो एक बाराती बनकर आए, और एक ने ना वो लड़की वाले बने हुए थे, ठीक है, एक लड़के वाले थे, एक लड़की वाले, एक की तरफ से गुड्डा था, एक की तरफ से गुड़िया थी। एंड देन उन लोगों की ना, उन लोगों ने शादी करवाई। और फिर है ना, और पूरा मतलब हर सारे अरेंजमेंट जैसे शादी रियल शादी में होती है ना, वैसे उन लोगों ने किया था। एंड देन सारे रिचुअल्स हुए थे, शादी हुई थी एकदम पर्टिकुलरली। एंड देन जो खाने का होता है, उस पूड़ी वूड़ी बने थे। एंड देन सब्जियां थी, मतलब जो भी शादी के जो भी रिचुअल्स होते सारे उन लोगों ने फॉलो किए थे। एंड आई ऑल्सो ज्वाइन दैट पार्टी, मैंने भी उसे ज्वाइन किया था, मैंने बड़ा इन्जॉय किया था। मेरी जो सिस्टर थी ना, उसने भी किया था। तो मतलब मैं तो बहुत छोटी थी उस वक्त, तो मैं बस, हाँ, मैं बस मस्तियाँ करती थी अपने कज़न लोग के साथ। मतलब वो दिन याद आते हैं तो लगता है, अरे यार क्यों चले गए बचपना। अगर आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसी स्टोरी है ना, देन डू शेयर मी इन द कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। चलो, फरहत मैम ने बहुत बातें कर ली। नाउ कम टू द पोएम। तो कोई स्टोरी सुनाने, मेरा जो भी पर्पस था ना, आपको स्टोरी सुनाना, ऐसा नहीं था मुझे अपनी कहानी आपको बताना था। बस मैं आपके अंदर इंटरेस्ट जगाना चाहती हूँ, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, ताकि ये ना, जो टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड होता है ना, वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए, आप एक दूसरे को जानोगे तो, है ना। और ऐसे भी मेरी स्टोरी आई थिंक इंटरेस्टिंग थी, बोरिंग तो नहीं होगी। चलो, जैसे भी हो बता दो आप मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, then see, here this girl Bessie is talking to her doll that, and what is the name of that doll? That is Matilda Jane. And she is telling in the first stanza, Matilda Jane, you never look at any toy or picture book. क्या डॉल किसी की तरफ देख सकती है या आपसे बातें कर सकती है? नो. So here that Bessie is complaining to her doll that you never look to a picture or toy. मैं जब भी तुम्हें कुछ दिखाती हूँ तो तुम उसे देखती नहीं हो. And she is complaining to that doll. Okay. And again she is saying that I show you pretty things in vain. You must be blind, Matilda Jane. And what she said that I used to show you many things, that is pretty things, but you don't look at them. एंड ऑल दिस माई अटेम्प्ट गोज वेन. जो सारे मेरे जो मैं जो भी करती हूँ सारे क्या हो जाते हैं, बेकार चले जाते हैं. दैट दैट इज़ ऑफ नो यूज़. एंड सो आई थिंक यू आर ब्लाइंड बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट देम. इट मीन्स वॉट, यू आर ब्लाइंड. जो बच्चे होते हैं ना, उनको क्या नॉलेज है, अगर उनके उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर जो कुछ नहीं देख रहा हो देन दे आर ब्लाइंड, है ना. तो यहाँ दैट लिटिल गर्ल इज सेइंग टू हर डॉल दैट यू आर ब्लाइंड बिकॉज whatever I'm showing you, you're not looking at them. That's why she has called her blind. Now come to the next stanza. I ask you riddles, tell you tales, but all our conversation fails. And here, when she plays with her doll, then she used to tell her stories, then she used to ask her riddles, but that doll doesn't reply. क्या doll reply करती है? No. That's why here again, that's why here also the doll is not replying. So this little girl is saying that our all the conversation has become failed because whatever I'm saying, you are not listening to me and you are not responding. That's why it has become fail. And then you never answer me again. And whatever I'm saying, whatever I'm asking, you don't answer, you don't respond. That's why all our conversation becomes failed. So I think you are dumb. मतलब कि तुम ना बड़ा बुद्धू हो. She is telling to her doll. Okay. Now come to the next stanza. Matilda, darling, when I call, you never seem to hear at all.
I shout with all my might and main, but you are so deaf, Matilda Jane. And again in the next stanza, what she is telling that Bessie is saying that whenever I used to call you, then you don't listen to me, you don't hear me, you don't respond me. So whatever I used to say you, whatever I used to call you, then what all my attempts are gone in vain. मतलब जो भी मैंने मेहनत की, जो भी मैं तुम्हें बुलाती हूँ, जो भी मैं अटेम्प्ट करती हूँ, वो क्या होते सारे बेकार चले जाते हैं. एंड मैं सारे अपने एफर्ट्स लगा देती हूँ, दैट बिकम्स इन वैन. ओके, इट आई थिंक यू आर डेफ. If you're not listening to me, and if you're not hearing to me, and you're not responding, you're not giving me answer after saying something about by me, then it means what? You are deaf. जब मैं कुछ बोल रही हूँ तुम सुन नहीं रही, you are not responding, you are not listening, it means what? तुम deaf हो. Deaf means what? One who can't hear. Okay, blind means one who can't see, and deaf means one who can't hear. Okay, so in the third stanza, what she has called to her doll, here the Bessie has called to her doll are deaf. Okay, okay, देखो कितनी क्यूट सी डॉल है ना इसकी. लिटिल गर्ल जो है ना वो बेसी, शी इज ऑल्सो क्यूट एंड हर डॉल इज ऑल्सो क्यूट. Okay, now come to the last stanza. Matilda Jane, you need not mind, for thou you are deaf and dumb and blind. There is someone loves you, it is plain, and that is me, Matilda Jane. In the last stanza, this Bessie is saying that, okay Matilda, don't worry. अगर इफ़ यू आर डेफ, यू आर डम, इफ़ यू आर ब्लाइंड, देन नो इशू. ऐसा नहीं कि इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑल दीज थिंग्स आई विल start hating you. No, I will always love you, because if you are still, you are deaf, dumb and blind, then still I will love you. Then there is someone who loves you, and that's me. तुम इतना, अगर तुम ब्लाइंड हो, तुम डेफ हो, तुम डम हो, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी. आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर टू लव यू. मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी तुम्हें प्यार करने के लिए. जो मेरा लव है ना, दैट विल नॉट बी सेल्फिश. ओके, और जो मेरा लव है वो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा प्लेन सिंपल रहेगा. मतलब कि आई विल ऑलवेज लव यू. ओके, उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी. एंड हु विल लव to that doll, that Bessie, she's telling about herself that I will always love you. And here is she is saying, and that is me. It means there is someone who loves you, मतलब हमेशा कोई ना कोई तुम्हें प्यार करने वाला रहेगा, that will be me. और यहाँ वो कह रही है that I will be always there to love you, Matilda Jane. Okay, so this little girl is talking to whom? She is talking to her doll, and whose name is Matilda Jane. All right, that little girl name is Bessie, and then the name of the doll is Matilda Jane. All right, so this was the poem. I hope you would have enjoyed this poem. And if you have enjoyed this poem, if you have liked my video, if you have liked the way of my teaching, then do subscribe my channel and hit the like button. Thank you and have a good day. Bye bye. And don't forget to write your childhood experience in the comment box. Okay, so bye bye.